Hi future officers, welcome to EduTap and welcome to your another important monthly revision series session. And today we are going to revise the reports and indices of the month of March 2025. And all of you are really welcome to the today's session, my dear friends. If I'm audible and visible to all of you, please give me a thumbs up in the chat box. So we all are aware that till now we have covered the January and February month completely when it comes to the reports, RBI notifications, current affairs and the schemes. And for the month of March also, we have also covered the RBI notifications and the schemes. And in today's session, we are going to cover the reports and indices for the month of March 2025. And the coming Thursday, that is the next Thursday, we will be covering the current affairs of March 2025. Okay. So good evening, Gururaj, Shanika, Kshitij, Manish, and all other people who have joined us live today. So let me tell you, my dear friends, that if you have not covered the March 2025 current affairs, specifically reports, then let me tell you that this session is going to help you to cover the reports of the month of March 2025 in a very detailed manner. तो हम उससे related कुछ important questions को cover करेंगे और साथ ही साथ ensure करेंगे कि हमारी complete revision आज के session से हो जाएगी for March 2025 reports. ठीक है जी? So I hope that all of you are really excited for the today's session, right? So यहाँ पर before starting the session, guys, let me tell you that this session is for all the people. First, the aspirants who have already covered the reports, and now it will be a testing time for all of those people that whether they are able to retain all the aspects, all the facts, figures, all the dimensions of the reports or not. Apart from that, and if you're someone who has not yet covered these reports, let me tell you, again, this session is going to be very helpful for you to understand the key important dimensions across which a question can be asked from the month of reports for month of March 2025. Okay? So if you're still new to our YouTube channel, you can subscribe to it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And साथ my dear friends, let me tell you that हमारे जितने भी YouTube sessions हैं, उनका PDF आपको मिलता है हमारे Telegram channel के ऊपर, and you can definitely join the Telegram channel by clicking on the link given in the description of this particular session. Now, today I will be starting this session with a very important report, the one that we have also seen in the RB Grade B officer mains examination in 2024. And you can see here the paragraph which has been directly taken from that particular examination. You can see the paragraph is on the World Economic Outlook and the Global Risk Report. So यहाँ पर एक integrated paragraph आया था from both the topics, that is World Economic Outlook and Global Risk Report. If I talk about the Global Risk Report, it identifies the global risks emerging over the next decade, particularly in the context of technological shifts, climate change, right? So every year, World Economic Forum comes with the Global Risk Report. And this year, again in the month of March 2025, this report was been released. And now we will be covering the important question on the same. So ये question आपका RBI mains exam में last year आ चुका है. That's why it is very important that we should cover such report in a very detailed manner. So the first question to all of you, that which of the following statements is or are correct regarding the risk factors identified in the Global Risk Report. So Global Risk Report 2025 के अंदर जो हमारे risk factors identify किए गए हैं, so you have to identify that what exactly are those risk factors जो कि एक significant global crisis का cause बन सकते हैं. So you need to identify them. 5 statements are being given and you need to identify which one of the following belongs to that particular group. So here you can see state-based armed conflict is there, extreme weather events, geoeconomic confrontation, misinformation and disinformation, and societal polarization. So basically global risk report, जैसा कि नाम ही बताती है, global risk report. So जो risk वर्ल्ड आने वाले टाइम में फेस करने वाला है, उस रिस्क को आइडेंटिफाई करती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और उसी के बेसिस पर कुछ रिस्क फैक्टर्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया व्हिच कैन बी अ कॉज ऑफ सीरियस ग्लोबल कंसर्न इन द अपकमिंग टाइम. एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई हियर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस. So state-based armed conflict, extreme weather events, geo-economic confrontation, misinformation, disinformation, societal polarization. So my dear friends, I want all of you to give me the answer in the chat box. I can see in the chat box, most of the people are going with option E. So Gururaj, Kshitij, Kas, Mayank, Shanika, Suprava, Swapnil, all of the people are going with option E. That is all of the above. And yes, all of the above is the right answer. You can see here that these are the top 5 risk factors which are being identified by the Global Risk Report 2025. ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स को याद करना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Let me tell you that
Along with these risk factors, this report also mentions about the global risk for the short term as well as the long term. Short term means for the upcoming 2 years, what are the different risks that the world is going to face. And when it comes to the long term, that means in the upcoming decade, that is for a period of 10 years. And apart from that, India related finding is also very important. And the next question is on the same, that which one of the following are the top risks identified in India as per global risk report 2025. तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया कौन से रिस्क को फेस करने वाला है. वी ऑलवेज टेल यू that whenever we are covering any report, there are 5 dimensions to it, and apart from these 5 dimensions, one of the very important is the key findings related to India, the key details related to India. What is India's position? What exactly are the different changes which has happened in India with respect to that report? That is very important. And here you need to identify the top risks identified in India as per this report, which includes water supply shortage, misinformation and disinformation, erosion of human rights and or civic freedom, pollution, air, water, soil, or all of the above. So which one of the following is absolutely right? Please try to identify here. So to the question number 2, again I can see Gururaj, Happy, Mayank, all the people going with the option A. That okay, so this is basically are the top. Basically I want to ask you the top risks which are being identified, right? अगर हम top risk की बात करते हैं तो all of these are the top risks. ठीक है. So यहाँ पर अगर बात करते हैं कि the top risk जो बिल्कुल top पर है, तो वहां पर आपका ऑप्शन ए would have been the right answer. बट यहाँ पर top risk की बात हो रही है. So here option E, all of the above is the right answer, क्योंकि ये सभी हैं. अगर हम on the topmost level पर देखें, that is the water supply shortage, right? I think यहाँ पर थोड़ा सा wording का change है, but yes, most of the people have given me the right answer to this part, right? So that's why option E, all of the above will be the right answer, क्योंकि सभी इसका part है. These are the top 5 risks. तो हम इसको यहाँ पर change कर देते हैं, which are the top 5 risks, ठीक है? Which are the top 5 risks? I think now this will be much better. Okay, so this is the right answer, and these are the risks that we are required to retain from the examination point of view. Okay, I hope this part is clear to all of you. बढ़ते हैं next question की तरफ. So which one of the following is not among the top 10 global risk ranked by severity over the long term? That I already told you that short term and long term दो तरीके के risk ये report बताती है. तो लॉन्ग टर्म में कौन सा रिस्क नहीं है? सो टॉप 10 रिस्क के अंदर कौन सा पार्ट रिस्क का नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. 5 ऑप्शंस आर बीन गिवन. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, क्रिटिकल चेंज टू अर्थ सिस्टम्स, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन. सो गाइस, वी ऑलवेज टेल यू that whenever you are covering any question, first of all we need to identify its demand, then we have to focus on the keywords. अब यहां पर हम देखें तो कीवर्ड्स में आपके पास पूरे के पूरे ऑप्शन में रिस्क का नाम दिया गया है, तो यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, हमें पूरा इसको कवर करना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? I can see in the chat box people are going with option D, that is geo-economic confrontation. And can we lock this answer? So yes, option D. So let's try to log this answer, that is geo-economic confrontation, and that is absolutely right. Let me tell you, my dear friends, this question has been directly taken from the RBI Grade B Officer Mains 2024 examination. You can see here, this was the question which was being asked in the RBI Grade B 2024 मेंस एग्जामिनेशन. तो फेज 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जहां पर हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का एक इंटीग्रेटेड पैराग्राफ देखा, एंड दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन. एंड ऑन द सिमिलर लाइंस इस क्वेश्चन को हमने क्रिएट किया है फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट कि आप ये देखें कि वेदर योर प्रिपरेशन इज इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. क्या हम उन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन उन क्वेश्चंस ही कर रहे हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, देन इट इज नॉट हैविंग एनी रेलेवेंस गाइस. So there is no point in investing time in that, right? So that's why we just want all of you to have a focused preparation. आप उन questions की practice कीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. That's why we have brought such kind of questions for all of you. I hope कि आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल यहां से बूस्ट होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपका मेंस का में आ सकता है, तो जिसने इस क्वेश्चन का सही आंसर किया है, आप अपने मेंस एग्जाम के लिए +1 यहां पर मार्क कर सकते हैं, आप +2 यहां पर मार्क कर सकते हैं, राइट? सो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Let's try to move on to the next question. But
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले यहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सभी रिस्क प्रोवाइड किए गए हैं आपको. द कंप्लीट लिस्ट ऑफ टॉप 10 शॉर्ट टर्म रिस्क एंड द लॉन्ग टर्म रिस्क. In the long term risk, you can see extreme weather events, biodiversity loss and ecosystem collapse, critical change to earth system, natural resource shortages. So these are the top 5 risks in the long term, that is for a period of 10 years, that the world is going to face in the upcoming timeline, right? And these are the short term risks. So आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइडेड है. आई होप कि आप इसको कवर कर चुके हैं, कर सकते हैं. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. सी ये तो पार्ट होगी रिपोर्ट्स की, बट लेट मी टेल यू दैट आजकल एग्जाम के अंदर कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं आपसे. फॉर एग्जांपल, एज दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971. So can you tell me that what is the name of that person who was the founder of this World Economic Forum, who basically established this particular organization as one of the key one-stop solution where the bureaucrats and the people can sit together to basically mitigate and to fight with the critical issues which are taking place across the world. So what is the name of that person who recently stepped down from the chair of the World Economic Forum? What is the name of this person जिसने अभी रिसेंटली स्टेप डाउन किया एज द चेयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? सो यस, द राइट आंसर इज क्लॉस श्वाब. So Klaus Schwab is the right answer. And the person who was serving as the vice chairman has been appointed as the interim chairman for the World Economic Forum for the time being. Can anybody tell me what is the name of that person? I'm waiting for a response in the chat box. Can anybody tell me what is the name of that person? The person who has taken over. What is the right answer? The name of the person is Peter Brabeck. Peter Brabeck is the present interim chairman of the World Economic Forum. So with the help of this particular part, we have also covered some static details about this very important report that we have covered recently, and the organization as well. World Economic Forum is really very important organization, and the report released by it was being asked in the RB Grade B Officer Mains Phase 2 examination. So इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इससे स्टैटिक डिटेल्स को भी अच्छे से कवर करें. ठीक है, I hope everybody is clear to all of you. Yes, Chetan, you have given me the right answer. Let's move on to the next report. The next report is the World Water Development Report 2025. So this report has been recently released, and you have to identify here first of all that what is the demand of the question. The question is demanding you to identify the incorrect statement. तो आपको इस रिपोर्ट के रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. So let me give you some space. So there are 3 statements to this question. Why exactly we are covering the statement based questions? Because so that you are having the enough practice of such kind of questions कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं so आपको कोई डिफिकल्टी वहां पर फेस ना हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिवीजन सेशंस के अंदर इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे. ठीक है, सो यहां पर पहला स्टेटमेंट, लेटेस्ट ग्लोबल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दिस इज द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. तो अगर हम बात करते हैं 2021 के ग्लोबल एस्टिमेट्स की, तो उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर हैविंग द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज which utilizes approximately 72%. और जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री और म्युनिसिपल डोमेस्टिक यूज की, इट इज 15 and 13%. तो फोकस कीजिए इन डेटा पॉइंट्स पर. जस्ट फोकस ऑन, ट्राई टू फोकस ऑन दीज फैक्ट्स, जो कि इसी फैक्ट के अराउंड क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिपोर्ट रिलीज बाय यूनेस्को. सो किस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ये? यूनेस्को की रिपोर्ट है, और ये स्टेट करती है जो लोअर इनकम लेवल है यूटिलाइजेस ओवर 90% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन. तो जो लोअर इनकम लेवल कंट्रीज हैं, ये 90% अपना फ्रेश वाटर कहां पर यूज करती हैं? डोमेस्टिक कंजम्पशन पर करती है. और हायर इनकम कंट्रीज इट यूजेस फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? प्लीज ट्राई टू टेल मी हियर. द स्टेटमेंट नंबर 2. सो दिस स्टेटमेंट इज false here. Why so? Because when we talk about the lower income level countries, they basically use the most of the fresh water for agriculture purposes, for agricultural activities. And when we talk about the higher income countries, guys, higher income countries में क्या होता है? उनकी इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है? Their economy is based on industries. So that's why the agriculture activity is not the right answer. It is industry is the right answer. So that's why second statement is incorrect. Moving to the third statement. In 2022, 2.2 billion people
approximately 27% of the global population, उनको they lack the accessibility to the safely managed drinking water, where nearly 80% of them residing in the rural regions. So 80% लोग rural regions में थे, 27% of the global population उनके पास safely managed drinking water की accessibility नहीं थी. So this statement is absolutely right. So हमें identify करना है incorrect statement को. Right answer is option B, that is 2 only. And here I can see that yes, Swapnil, Suprava, Harshal, Manish, Nitya, Shanika, all the people have given me the right answer. That is option B. Absolutely right. This is the right answer. Now, my dear friends, you can see here that 25 countries which are home to a 25% of the world's population, they face extreme water stress annually. तो ये एक important finding है इस report की, जिसको question में include नहीं किया गया, but yes, it is really important to be covered. Apart from that, 4 billion people experience severe water scarcity for part of the year. तो ये दोनों डेटा को आप याद रखिए, 25 countries जो कि around 25% of the global population, तो यहां पर extreme water scarcity रहती है. Apart from that, 4 billion people experiences severe water scarcity in some part of the year. So this is something that we should remember from the examination point of view. Let's try to move to the next question. Next question is on the World Happiness Report. So my dear friends, in order to, as all of you are really preparing for RBI grade B, NABARD grade A or other examinations, अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव, दैट इज हैप्पीनेस. अगर आप एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हियर फोकस मोर ऑन योर स्टडीज. इसीलिए अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस की, वर्ल्ड लेवल पर सबका कोई ना कोई टारगेट है, सबको कुछ ना कुछ करना है, राइट? तो उसके लिए उनका स्टेट ऑफ माइंड भी हैप्पी होना चाहिए. इसीलिए सम क्वेश्चंस वर बीन आस्क्ड टू द पीपल अलोंग the level of the happiness that they are having, and कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर हमने आइडेंटिफाई किया कि whether they are happy or not. और ये हमने किससे आइडेंटिफाई किया? with the help of World Happiness Report. And that's why we were having a proper World Happiness Report. और इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं. So the 3 statements are been given. सबसे पहले डिमांड क्वेश्चन की है that we need to identify the correct statement. So टारगेट फिक्स रहना चाहिए कि करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है. पहला स्टेटमेंट, रिलीजिंग बॉडी वेलबींग रिसर्च सेंटर ने लॉन्च किया, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने, एंड द WHR's एडिटोरियल बोर्ड. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. सेकंड स्टेटमेंट, व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री है जहां पर लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट है. सो दैट मींस उनके टारगेट्स भी वो पूरे कर पाते हैं बिकॉज दे आर रियली इन द हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. एंड द नेम ऑफ दैट कंट्री इज Finland, which has been ranked as the happiest country in the world in 2025, and this is the 8th time that this country has topped the index. So second statement is also right. Third statement is about India. तो इंडिया की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इंडियाज रैंक वाज 118th with a happiness score of 4.389. अगर हम बात करते हैं द कंट्री विच इज एट द बॉटम ऑफ दिस इंडेक्स, दैट इज अफगानिस्तान, विच वाज प्लेस्ड लास्ट, दैट इज 147th पोजीशन पर था अफगानिस्तान. ठीक है. सो डेक्स्टर ने कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है. सो लेट्स ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन द रिपोर्ट हियर ओनली, राइट? सो यहां पर आउट ऑफ 147 कंट्रीज, इंडियाज रैंक इज 118th with a happiness score of 4.389. So my dear friends, try to identify the right answer here, as all the statements are correct here. So the right answer will be option D, that is 1, 2 and 3. All the statements are right. Let me tell you my dear friends, अगर आपने इस रिपोर्ट को इन डिटेल नहीं कवर किया, डू नॉट वरी. इस रिपोर्ट पे एक डिटेल सेशन ऑलरेडी हमने लिया है ड्यूरिंग द CT 360 सीरीज सेशन. उसका स्निपेट मैंने आपको यहां पर शो किया है. एंड आई आल्सो टोल्ड यू कि डिफरेंट फैक्टर्स क्या थे जिसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया गया द हैप्पीनेस लेवल ऑफ द कंट्री एंड द पीपल लिविंग देयर, व्हिच इंक्लूड्स GDP पर कैपिटा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट. मान लीजिए कि आप किसी कारण दुखी हैं, परेशान हैं, आपको सोशल सपोर्ट है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स का, क्या आर यू गेटिंग दैट सोशल सपोर्ट? So this is very important. And freedom to make life choices, generosity, perceptions of the corruption. तो इन सभी से मिलाकर, on the basis of these factors, we have tried to identify the happiness level of the people living in the countries with the help of World Happiness Report. और अगर हम बात करते हैं कि how exactly we can basically remember the name of the countries which are the top 5 performers, क्योंकि एग्जाम में top 5 performers की बात भी की जाती है, right? तो यहां पर आप देख सकते हैं, I gave you a way that is FDISN. F for Finland, D for Denmark, I for Iceland, then we are having S for Sweden and N for Netherlands.
और इंडिया की बात की जाए, इंडिया वाज ऑन द 118th पोजीशन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर। ठीक है, सो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस सेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, गाइस डू नॉट वरी, आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को निकालिएगा आज के सेशन की, और कुछ नहीं करना, इस लिंक पर क्लिक करना है एंड इट विल डायरेक्टली टेक यू टू दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, ये रिपोर्ट ओपन होगी, इसको अच्छे से सुनिएगा, कवर कीजिएगा, दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट पर, दैट इज द रिपोर्ट ऑन द ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया। सो जो बच्चे आरबीआई की प्रिपरेशन करते हैं, वी बेसिकली सी द ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बट इस साल एक रिपोर्ट आई है ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया, जो बताती है कि हाउसिंग प्राइसेस के ट्रेंड्स क्या है, वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इफ देयर इज समवन हु इज प्लानिंग टू परचेज द हाउसेस, राइट, किसी को कोई घर खरीदना, अपने सपनों का घर, ड्रीम हाउस, तो उसका प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, ये हमें बताता है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सॉरी, द ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया। तो आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, आइडेंटिफाई करनी है हमें करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। पहली स्टेटमेंट, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स, रिलीज बाय द एचडीएफसी बैंक, एंड अकॉर्डिंग टू दिस, एज ऑफ September 30, 2024, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की अगर बात करें, सो दे वर आउटस्टैंडिंग ग्रू बाय 14% ईयर ऑन ईयर, जिसका टोटल अमाउंट है 33.53 लाख करोड़। सो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो डेटा है वो एकदम करेक्ट है, बट यहां पर इफ आई आस्क यू गाइस दैट अगर हम बात करते हैं ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट, तो ये ट्रेंड एंड प्रोग्रेस कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बताता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली हाउसिंग के लिए इन इंडिया देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ बैंक, कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ दैट? That is National Housing Bank. So that's why this HDFC Bank is not at all correct. So this statement is incorrect here. Second statement, housing finance companies 81% of the total individual housing loan portfolio को account करती है, और साथ ही साथ जो remaining share है they are being held by the banks. But अगर हम बात करते हैं housing finance companies और banks की, so banks basically hold 81% of the share and the housing finance companies only holds 19% of the shares. So that's why यहां पर values को switch किया गया, and here this statement is also incorrect here. बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर, NHB Residex Index. तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ हाउसिंग इंडेक्स, तो यहां पर 6.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा गया इन द हाउसिंग प्राइसेस, एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. सो आई कैन सी इन द चैट बॉक्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग विद ऑप्शन सी, दैट इज 3 ओनली, एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आप देख सकते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट, तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द एशिया एंड द पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025. So this report basically provides us the data that whether we are progressing towards achieving the sustainable development goal targets or not in the Asia and the Pacific region. तो एशिया और पैसिफिक रीजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, पहली स्टेटमेंट, द रिपोर्ट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. वेदर दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम इज करेक्ट और नॉट? द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज इनकरेक्ट. तो यहां तक आपने इस स्टेटमेंट को कवर किया, यहीं से पता चला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आगे पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देयर इज नो नीड टू रीड आफ्टर दैट, जस्ट मार्क इट इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट, the region is performing better than the global averages. So guys, अगर हम बात करते हैं एशिया और पैसिफिक रीजन की, तो गोल नंबर 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, गोल नंबर 8 जो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, both of these goals have not performed well and they are below the global averages and not better than the global averages. So this statement is also incorrect here. Third statement, notable progress हमने देखी in the areas like hazardous waste, supporting small scale industries, tackling undernourishment. So in this area definitely we have worked well, and yes, so third statement is correct here. We were required to identify the statement which are incorrect. That means statement 1 and 2 are absolutely incorrect, right? So the right answer will be option A, that is 1 and 2 only. So let's try to see that what exactly the people have given. So Nitin Gururaj is saying option D is the right answer. See, try to see, we are basically trying to identify the incorrect statements here. Apart from that, some people are giving option D, some are giving option A. So here option A is the right answer. अगर हम बात करें इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है, so the report is released by the United Nations Economic and Social Commission
फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो एशिया और पैसिफिक के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया, जहां पर बताया नॉट 116 बट ओनली 16 आउट ऑफ 117 एसडीजी टारगेट्स आर ऑन द ट्रैक। ठीक है, और इनमें से 18 टारगेट्स ऐसे हैं जो कि आपके डेविएट कर रहे हैं, डिटेरियोरेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, द नेक्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर, that region is lagging behind in these areas and not it is better than the global averages. That's why both this statement number 1 and 2 are incorrect here. Okay, I hope कि everybody is clear with this part. बढ़ते हैं अगले statement पर, अगले question पर, but before that this is the complete list of sustainable development goals. So my dear friends, it is very easy to remember these sustainable development goals. So it's a request to all of you कि 17 sustainable development goals हैं जिनको हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं. So make sure कीजिए कि इसको अच्छे से कवर कर लीजिए. Just याद रखिए इनका नाम, कौन सा गोल किस टॉपिक से रिलेट करता है, राइट? और यहां पर आप इसको अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो गोल नंबर 1 इज अबाउट द नो पॉवर्टी. अगर पॉवर्टी नहीं होगी तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा होगा खाना खाने के लिए, सो देयर विल बी जीरो हंगर, राइट? अगर यहां पर सबका पेट भरा हुआ है गैस और एवरीबॉडी इज हैविंग द एनफ फूड, राइट? सो व्हाट विल हैपन, दे विल बी, इट विल लीड टू गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. सो इस तरीके से लिंक बनाते हुए आप डेफिनेटली इन सभी गोल्स को याद कर सकते हैं. ठीक है, आई होप कि ये जो एक छोटा सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू रिटेन दीज 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट वी वांट टू अचीव बाय 2030. Now let's try to move to the next question. Next question is on a report that is from borrowers to builders, women's role in India's financial growth story. तो women's का रोल क्या है ग्रोथ स्टोरी के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है. My dear friends, we all know that we have celebrated the International Women's Day on 8th of March. And you can see here that this is a timeline that when we assess the role of women in the different areas, and the financial growth story of India is really a very important part when it comes to the RBI. And here you need to identify the statements which are correct with respect to this report. So first statement, अगर हम बात करते हैं women borrowers की, जो रिटेल क्रेडिट अवेल कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनकी यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है. We have seen that they have increased by 22% from 2019 to 2024. Apart from that, there are 27 million women had monitored their credit, reflecting a 42% increase over the previous year. So 27 million women they have monitored their credit कि वो किस तरीके से अपने खर्चे करती हैं, राइट? पूरा का पूरा क्रेडिट उन्होंने मॉनिटर किया है. सो बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देन द शेयर ऑफ वुमेन इन द टोटल सेल्फ मॉनिटरिंग बेस वाज 17.89%, reduced from 19.43% in the 2023. So my dear friends, let me tell you that ये जो सेल्फ मॉनिटरिंग बेस है, वी ऑल नो कि आजकल फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अच्छी है लोगों की, एंड वी हैव आल्सो फोकस्ड ऑन द वुमेन एज वेल एज अ पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. एंड दैट्स व्हाई ये जो सेल्फ मॉनिटरिंग बेस है, इसका कोई चांस ही नहीं है कम होने का. इट हैज ओनली इंक्रीज्ड. सो इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17.89% in 2023 to 19.43% in 2024. So that's why the fourth statement is incorrect here. We were required to identify the correct statement. So here the right answer is option A. Option A is the right answer. और क्यों है? Third statement में क्या incorrect है? We have already covered that. And apart from that, when we talk about the name of bodies which have released this report, it includes TransUnion Civil, Women Entrepreneurship Platform of the Niti Aayog, and the MicroSave Consulting. तो इन तीनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया. The name is already given to you. From borrowers to builders, the roles of women in India's financial growth story. और हमारा अगला क्वेश्चन भी सेम ही रिपोर्ट के ऊपर है और यहां पर आपको आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, सो 42% ऑफ द लोन्स by women for the personal finance compared to the 39% in 2019. तो यहां पर पहली स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि किस पर्सनल फाइनेंस की बात की जाए तो पहले पर्सनल फाइनेंस के लिए कितने परसेंटेज ऑफ लोन्स थे, अब कितने परसेंटेज ऑफ लोन्स हैं. देन द नेक्स्ट पार्ट, उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में कितना है, 18% है. ठीक है, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज अ वुमेन, बट स्टिल उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 18% ऑफ द जीडीपी. नेक्स्ट पार्ट, अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को यहां पर प्रमोट करते हैं तो इससे 150 टू 170 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया के अंदर. तो इंडिया रिलेटेड पार्ट है ये, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है. So let me tell you here guys that all these statements are correct here and the right answer is option D, that is 1, 2 and 3. I can see in the chat box Kshitij, Manish, Swapnil, Nitya
Everybody has given me option D as the right answer. Well done, guys. Let's move on to the next question, and that is on the Glass Ceiling Index 2025. तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स बेसिकली असेस करता है अबाउट द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर द वुमेन. व्हाट इज द वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट फॉर वुमेन इन दो कंट्रीज. और स्पेसिफिकली हमने यहां पर ओईसीडी कंट्रीज को टारगेट किया, असेस किया कि हाउ इज द वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन देयर. सो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट विच इज बीन रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट. तो द इकोनॉमिस्ट इसको रिलीज करता है. पहली स्टेटमेंट, कौन सी कंट्री टॉप पर है? स्वीडन टॉप पर है, एंड इट वाज द बेस्ट कंट्री फॉर वर्किंग वुमेन, फॉलोड बाय आइसलैंड एंड फिनलैंड. सेकंड स्टेटमेंट, वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन इज बीन असेस्ड बाय द रिपोर्ट across 29 countries of OECD region. Absolutely right. Third statement, New Zealand was identified as the most improved country in the 2025 rankings. तो 2025 की रैंकिंग में मोस्ट इंप्रूव्ड कंट्री कौन सी थी? न्यूजीलैंड थी. सो कैन एनीबडी टेल मी कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है? There is not a single statement which is incorrect. So right answer is option E, that is none of the above. So none of the above is the right answer to this question. अगर हम बात करते हैं टॉप 5 कंट्रीज की, इट इंक्लूड स्वीडन, Iceland, Finland, Norway and Portugal. So these are the top 5 countries in this Glass Ceiling Index 2025. That is the right part. Now let's try to move on to the next question. The next question is about the Energy Statistics India 2025 report. So Energy Statistics India 2025 report was there in the news articles, and it basically provides us information about the states contributing to half of the India's renewable energy generation potential. तो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पोटेंशियल है उसमें जो मेजर स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर. एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई रियली बिलीव दैट आप सभी को पता है इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक हमें कार्बन एमिशन फ्री कंट्री बनना है बाय 2070. तो इसीलिए यहां पर काफी जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम मूव ऑन करें. और आपके सामने यहां 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स, which of the following statement are correct regarding the states which are contributing to over half of India's renewable energy generation. तो कौन कौन से स्टेट इसका पार्ट है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका. सो बेसिकली क्वेश्चन आपका इस स्टेट के नाम के ऊपर है. सो द क्वेश्चन इज ऑन द नेम ऑफ these states. And I can see in the chat box most of the people are going with option E, that is all of the above. Yes, all these states are basically responsible and they accounts for over half of the India's renewable energy generation potential. So option E is the right answer. And now when we talk about the releasing body of this report, the releasing body of this report is NSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation. I hope this part is clear to all of you. Question number 11. And now guys, we are moving towards the last question of our today's session, that is the question number 12. And before that, let's try to see some other important details here. So अगर हम बात करते हैं कोल की, it has contributed 79% of the total primary energy generation in our country. And industrial sector largest consumer है इंडिया का in electricity. तो largest consumer of electricity is which sector? Industrial sector. तो ये these are little bit less important points, so that's why I have just mentioned them as an additional points, but major point is these parts. The name of the state is really very important, and the releasing body is very important to be remembered from examination point of view. Now let's try to move on to the next part, that is the Future of Free Speech Index 2025. And in the Future of Free Speech Index 2025, you have to answer that what is India's rank. Guys, we always tell you that India related information is really very important to be remembered from examination point of view. इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से मुझे बताइए that what is India's position in this particular index. आपके सामने दिए गए हैं रैंक्स. Try to identify. I want all of you to answer me this question. So I can see most of the people. Nitya has given answer as option D. Guru Raj is also opting the option D as the right answer. What about the other people? I want all of you to answer this question. This is the last question of the today's session, and let me tell you that we have covered all the important reports of the month of March 2025. तो सभी important reports को हमने इस सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया है. एंड इसके बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सेशन को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा फ्रॉम द पीडीएफ ऑफ द सेशन. एंड आई कैन सी पीपल आर गोइंग विद ऑप्शन डी, एंड यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एंड इफ आई टॉक अबाउट द टॉप 3 परफॉर्मर्स इन द Future of Free Speech Index 2025, it includes Norway on the top, Denmark on 2nd position, and Hungary on the 3rd position. So these are the 3 countries which are on the top in the Future of Free Speech Index 2025.
And my dear friends, that's all from the today's session. So now it's the time of the queries. And if you are having any query related to this session, please feel free to ask that in the comment section and I will be giving you the answer about the same. Right? So it is very important for us, as we all know that last year, अगर हम बात करें specifically RBI Grade B Officer exam की, तो the paper was dominated by the reports. It is very important for us to remember the reports, to cover the reports in a really comprehensive manner, so that एग्जाम के अंदर अगर इस साल भी वो पैटर्न रिपीट होता है तो रिपोर्ट्स को हम अच्छे से कवर करें और साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर कर पाएं. एंड आई बिलीव that the people who have already covered these reports, so उनका confidence level boost जरूर हुआ होगा after solving these questions. Please give me a thumbs up in the chat box अगर आपका confidence level बढ़ा है यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ PYQs को भी देखा और PYQs में हमने देखा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था. तो क्वेश्चन काफी इजी होगा बट थोड़ा घुमा फिरा के होगा. It will be little bit in a technical language, right? But yes, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, अगर आपने अच्छे से चीजों को पढ़ा है, रिवाइज किया है, definitely there is no one who can stop you to answer the right answer in the examination. So I can see here that there are no queries in the chat box. My dear friends, I really believe that today's session was really useful and fruitful to all of you, I hope. And अगर आपको कोई भी query है, again, still you can ask me in the comment section and I will be giving you the right answers. Apart from that, if you are someone who is still yet confused कि अभी करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करें या ना करें, अगर आप अभी कंफ्यूजन में हैं या फिर किसी के मन में ऐसी क्वेरी कि कैसे करंट अफेयर्स को स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, so do not worry, just drop us a mail at hello@edutap.co.in or call us at 8146207241. We have got your back and do not worry, we will be resolving all your doubts related to the exam preparation. ठीक है? So do not worry, just make sure that you are dropping us an email or calling us at this, because जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, the question which is acting as an obstacle in your journey, तो तब तक उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकेगा. तो मेक श्योर कि आपकी जर्नी स्मूदर हो. कैसे होगी स्मूदर? बाय रिजॉल्विंग ऑल योर डाउट्स, be it a small and a bigger one, but we have to make sure that we are resolving all our doubts. Okay, so guys, that was really great to have all of you here today in this session. Now we will be meeting you in the next section. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.